A dream written down with a date becomes a goal. A goal broken down into steps becomes a plan. A plan backed by actions makes your dreams come true. Namaste and good evening, one and all present here. I, Mrs. Damini Amol Dahake, today's host, behalf of Sri Vardhaman Jain Educational and Research Multipurpose Foundation family. I feel privileged to welcome all of you to today's Alumni Talk. Dear friends, it is said that when we are beautiful, it's God gift to us. When we live our life beautiful, it's our gift to God. Therefore, being a male is matter of earth. Being a man is matter of age. Being a gentleman is a matter of choice. Dear friends, learn to make right choice which are within our control as our gift to God, and thus live our life thorough and perfect. Today's program is about transforming dreams into reality by Dr. Mansi Sanjayji Naphade. This program has been organized in the living memory of legendary, the founder secretary of this institution, the person who believes in cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence. Yes, I am talking about our late Shri Premchandji Zambad sir, जे नेहमी म्हणायचे अपने लक्ष्य को इतना महान बनाओ कि व्यर्थ के लिए समय ही न बचे. त्यांच्या मते शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे आणि जो ते पिईल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही. ते सतत नांदुरा गावातील मुलांना शहरातल्या मुलांसारखे चांगल्याचे चांगले शिक्षण मिळावे म्हणून अहोरात्र मेहनत करायचे. त्यांच्या व्यक्तिमत्वाबद्दल मी म्हणू इच्छिते, नमन त्यांच्या कार्याला, नमन त्या ज्ञानदेवताला, नमन त्या विद्यार्थी प्रेमाला, नमन त्या महापुरुषाला, नमन अशा आपल्या श्री प्रेमचंदजी झांबड सरांना. सर ने कामयाबी की ऊंचाइयों को छू लिया था. उनके इस कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमारी संस्था के डायरेक्टर मीना जी झांबड़ मैम का सहयोग रहा है. आज के इस कठिन परिस्थिति से उभरने के लिए हमें हमेशा मैम का मार्गदर्शन मिलता है. सर के कार्य को अपना मिशन मानकर वह आगे बढ़ा रही है. अपने कुशल नेतृत्व के कारण मैम ने संस्था को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है. उनके इस कार्य का बखान करते हुए मैं चंद पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ. मैं खुद में पूरी जननी हूँ, जीवन भी मैं, जज्बातों पे मेरा जोर नहीं. सशक्त हूँ व साकार भी हूँ मैं, नारी हूँ कमजोर नहीं. दर्पण हूँ व अक्स भी मैं, झुका सके मुझे वो शख्स नहीं. स्वाभिमानी हूँ व आत्मनिर्भर भी, टूट के बिखरूं अब वो वक्त नहीं, टूट के बिखरूं अब वो वक्त नहीं. I want to influence you all about today's our special alumni, Dr. Mansi Sanjayji Naphade. Dr. Mansi is our former student till grade 7. After that, she has completed her education and earned M.B.B.S degree from Bahusaheb Government Medical College, Dhule. She also served as Corona warrior in COVID ICU wards and wards during the second wave of Corona epidemic. Now, she is working as intern doctor in her own medical college, Bahusaheb Government Hospital in Dhule. She is an active member of STRZVN, an NGO run by doctors and medical students which conduct various activities for betterment of society. One more good thing about her that she is a member of LFU, that is Lift for Upliftment, an organization which provides free NEET coaching for needy students. She is a poet, digital creator and writer. मानसी, हम आपके हौसलों से बखूबी रूबरू हुए. आपके बुलंद हौसले ने ही आपको यहाँ तक पहुँचाया है. अपने स्वास्थ्य तथा अपनी मुसीबतों को नजरअंदाज कर आप हमेशा अपने कार्य के लिए तत्पर रहती है. हाल ही में 3 दिन पहले आपका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था. फिर भी पूरी निष्ठा के साथ आज का वेबिनार करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी है. ये हमारे लिए गर्व की बात है. हमारी संस्था ने छात्रों को सिर्फ शैक्षणिक शिक्षा न देते हुए
संस्कारों से उभारा है। उसका ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने डॉक्टर मानसी है। मैं कहना चाहूंगी, doctors, nurses, and many others in the healthcare sector have done the role of a brave medical army fighting against coronavirus, standing strong with thermometer, stethoscope, and ventilator as their weapons. Now, continuing the flow of program, I request Dr. Mansi Sanjayji to enlighten us with her experience. Thank you, ma'am. Am I audible to everybody? Okay, let me begin. Yes, sir. Am I audible? Yes, Mansi, you are clearly audible, beta. Okay, sir. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you for such a beautiful introduction. And a very good afternoon to everybody from me. So, before I begin my webinar, let me take a moment and pay my homage and utmost gratitude to our beloved Prem sir, without whom none of this would have been possible. If today kids of a small place like Nandura are going to huge colleges and achieving so much, it is only because of sir. I would also like to thank Meena ma'am. Okay, I would also like to thank Meena ma'am. She had always played an integral role in the functioning of our school. Actually, sir का ये dream, sir का ये vision. Am I audible, sir? I am hearing some disturbance. Okay, let me continue. So I would like to thank Meena ma'am. She has always played an integral role in the functioning of our school. I remember as a kid, she used to come every day to take rounds in our school to ensure that everything was functioning properly. And even now, अभी भी सर के विजन को जिंदा रखने के लिए वो रात दिन मेहनत कर रही है और हमारे स्कूल को रोज एक नई ऊंचाई पर पहुंचा रही है. Ma'am, you are such a huge inspiration to all of us. Thank you for showing us what a strong woman looks like. बट मैम मुझे आपसे एक शिकायत है और ये मैं आपकी बेटी या आपके स्टूडेंट बोल के नहीं बल्कि टॉकिंग टू यू टुडे एज अ डॉक्टर एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना खो गए हो कि आप अपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे. सो आई वुड एडवाइस यू टू प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो. I would like to thank all my teachers, Anubha Mantri ma'am, Gade sir, Jhamre ma'am, Maya ma'am, Mishra sir, all the teachers and non-teaching staff of our school. Thank you for always believing in me. I would also like to acknowledge all my batchmates, my juniors and seniors. They made my school life a very fun experience. अभी मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी. All of you, I am Dr. Mansi Naphade, daughter of Dr. Sanjay Naphade, and currently I am doing my internship in Shri Bhausai Vire Government Medical College. Now moving on to today's webinar, the topic for today is transforming dreams into reality. So let me take all of you on this journey of how I achieved my dream of becoming a doctor. So आज के इस वेबिनार को मैंने रफली 4 पार्ट्स में आपके लिए डिवाइड किया है. Firstly, I'll be talking about my school life. After that, my 11th, 12th. Then my life in the medical college, like my M.B.B.S life. And after that, finally, my internship. So it is said that when you want to create something big and long lasting, you have to build a solid foundation for it. And that is exactly what our school did for me. So मैं हमारे स्कूल में नर्सरी से लेकर 7वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ. And the habits, morals, and the values which were inculcated in me at that younger age have stayed with me even till now, and they continue to guide and help me. And our school did not help me only in the academic field, but also for the overall development of my personality. I still remember, I think it was in class 5th or 6th, when Shivani Di, Kashmira, and myself, we were selected to represent India at the international level yoga competition. The pride it had brought to the whole of Nandura and the confidence it built in me is immense and it still continues to inspire me.
Now I still remember in every cultural program we had innovative dance and drama, and every year it used to get more and more innovative. We had so many competitions like class decoration competition on Diwali, traditional dress competition on Raksha Bandhan, best from West competition and many more. आज अगर मैं अपने एमबीबीएस के बैचमेट्स के साथ ये शेयर करूँ तो they have not even heard of these competitions which were conducted in a small place like Nandura because of our school. Now this was the extracurricular part. Our school also made me into a environment friendly and aware citizen that I am today. This was in class 7th. हमने एक छोटा सा initiative लिया था. Me and some of my friends, we had created posters regarding environmental awareness and what we can do to reduce pollution and all other problems. So that in that gathering तभी हमारे education minister थे वो gathering में थे and he had appreciated our effort. That experience still continues to fill me with so much inspiration that at that small age a person as huge as the education minister came to appreciate us. After this, moving on to my 8th, ninth, and 10th, I completed my 8th, 9th, 10th in a residential school in Jalgaon, which is Anubhuti School. So, 8वीं कक्षा में ही मैंने पहले बार घर से बाहर निकली थी. So that experience, it helped me become self dependent. खुद के काम खुद कैसे करें, खुद की चीजों के लिए खुद फाइट कैसे करें. मम्मी को नहीं लेके जा सकते अभी स्कूल, कुछ झगड़ा हुआ कुछ ये हुआ तो मम्मी को नहीं लेके जा सकते. यू हैव टू हैंडल इट ऑन योर ओन. सो अनुभूति स्कूल हेल्प मी टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट. कि आत्मनिर्भरता कैसे आप में आप लेकर आ सकते हो, ये सीखा मैंने. अभी आप में से बहुत से बच्चों का ड्रीम होगा कि उनको डॉक्टर बनना है या मेडिकल फील्ड में करियर बनाना है. तो अगर आपको डॉक्टर बनना है या मेडिकल मेडिकल फील्ड में करियर बनाना है तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट 2 साल जो है वो है आपके 11th एंड 12th. आप 11th 12th में जो मेहनत करते हो उसके बेसिस पे ही आपका एडमिशन मेडिकल में होगा या नहीं ये डिसाइड होगा. सो आई विल टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑफ 11th एंड 12th. 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए मैंने अकोला में ओक सर का सेफ हैंड्स करके एक कोचिंग क्लासेस है वहां पे एडमिशन लिया था. और अगर आपको अभी if you want to become a doctor you have two options, right? First is if you can take physics chemistry and biology group. अगर वो आप लेते हो तो आपका फिक्स होना चाहिए कि मुझे डॉक्टर या डॉक्टर रिलेटेड फील्ड्स में ही करियर बनाना है, जैसे नर्सिंग हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, बीएएमएस हो गया, डेंटल हो गया. या तो यू कैन गो फॉर जनरल. जनरल में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और उसके साथ मैथ्स भी आएगा. So then your options remain open. You can go for doctor, engineering or any other science related field if you want. But मेरा बचपन से ही फिक्स था कि I wanted to become a doctor. So I chose physics, chemistry, biology group. Now I would like to tell you all about the challenges I faced in 11th, 12th and how I overcame them. So 11वीं 12वीं में अगर सबसे पहला चैलेंज आपको मैं बताऊंगी तो दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके एग्जाम का पैटर्न, मार्किंग स्कीम कभी कभी एग्जाम को ही बदल देती है एंड विदाउट एनी प्रायर नोटिस. अचानक से एक दिन कोई तो एक ये आता है, न्यूज में आता है कि आपके एग्जाम का पैटर्न बदल गया या आपका एग्जाम का नाम ही बदल गया. तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें 11th 12th में बहुत एंग्जाइटी होती है. सारे बच्चों को बहुत डर लगा रहता है कि अभी गवर्नमेंट क्या नया रूल निकालेगी. तो हम अपने आप को इस सिचुएशन में कैसे प्रिपेयर करें. सो फर्स्ट थिंग इज बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो. ऑलवेज उससे अच्छा हुआ तो हम हैंडल कर ही लेंगे, सबसे बुरी चीज क्या हो सकती है उसके लिए हम प्रिपेयर रहेंगे. सेकेंड थिंग इज स्टेइंग काम. इन एवरी सिचुएशन स्टे काम because in the end it is your preparation which is going to get you the result. Whatever be the name of exam, AIPMT हो, NEET हो या CET हो, your preparation is what will get you the result. Second thing I would like to talk about is consistency. 11th 12th में आपका इंटेलिजेंस एंड टैलेंट उतना ही मैटर करता है जितना आपका कंसिस्टेंसी. And you have to stay motivated to study for 2 whole years. So how do you do that? How do you stay motivated for 2 years? So first thing you will do is build a routine for yourself. कि मैं इतने बजे उठूंगी, इतने से इतने मेरा लेक्चर्स होता है, इतने से इतना सेल्फ स्टडी होता है, शाम को खेलना है, वॉट एवर. बिल्ड अ रूटीन फॉर योर सेल्फ एंड फॉलो इट थ्रू आउट द 2 years. इसका मुझे बहुत हेल्प हुआ एंड आई
थिंक सबको ही अगर इफ दे फॉलो दिस इट विल बी वेरी हेल्पफुल। नाउ द थर्ड थिंग इज बी क्यूरियस, आस्क क्वेश्चंस। ये अभी के लिए भी अप्लीकेबल है आपको, आप जब 10th तक भी अप्लीकेबल है। जब भी क्लास में इफ यू आर अटेंडिंग अ लेक्चर और आपको कोई भी आपके दिल में एक डाउट आया, यू शुड आस्क इट देयर एंड देयर। इससे क्या होता है, आपका डाउट भी क्लियर हो जाता है एंड यू विल बिल्ड कॉन्फिडेंस। सो दिस वन थिंग आई डिड इन माई 11th 12th कि आई वॉज द मोस्ट क्यूरियस पर्सन यू वुड एवर सी। मैं क्लास में भी डाउट पूछती थी, क्लास के बाद पीछे डाउट दिस कि आज मुझे doubt किए नहीं तो मैं रूम पर जाऊंगी, क्लियर करके ही रूम पर जाऊंगी। एंड दिस हेल्प मी अ लॉट। वन One other thing I would like to tell is never memorize something which your mind will anyways remember if you understand the reason behind it. मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, आपको कभी कभी लगता है कि रट्टा मार के या कोई चीज लर्न करके टाइम बच रहा है, टाइम नहीं बच रहा है। उससे अच्छा अगर आप उस चीज के पीछे का रीजन समझ के, उस चीज को समझ के अगर पढ़ोगे तो आप चाहकर भी उसको भूल नहीं पाओगे, आपके ब्रेन में वो इतना पक्का बैठ जाता है। सो दिस इज अनदर थिंग। नाउ वन थिंग इज, सब बोलते हैं हार्ड वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क सब लोग करते हैं, यू शुड डू स्मार्ट वर्क बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम एंड यू हैव लिमिटेड एफर्ट दैट यू कैन पुट। So you should know where to put how much effort. Now the fourth and very important thing is friend circle. 11वीं 12वीं में क्या होता है, आप सबसे पहले बार घर छोड़कर बाहर जाते हो, तो मेक श्योर यू मेक फ्रेंड्स हु हैव सिमिलर एम्स एंड सिमिलर इंटरेस्ट लाइक यू। आप ऐसे वक्त गलत संगत में जाके गलत हैबिट्स आप बिल्ड कर सकते हो जो आपने बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर 11th and 12th is avoiding distractions. Now, how did I do that? How did I avoid distractions in my 12th? तो मैंने जब तक मेरा एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ तब तक मैंने एंड्रॉयड मोबाइल खरीदा नहीं। तब तक आई यूज टू यूज दैट डब्बा मोबाइल जो छोटा सा आता है, आई यूज दैट ओनली टिल 12th। सो दैट हेल्प मी इन अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। तो ये सब चीजें फॉलो करके मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया था। अभी आपका थोड़ा सा समय लेकर मैं आपको मेरा सीईटी और नीट का एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी बिकॉज आई जेन्युइनली थिंक यू कैन लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक दैट आई डिड। मेरा सीईटी जब था तो फॉर 2 years व्हेन आई वाज इन ओक्सर्स कोचिंग क्लासेस, आई वाज कंसिस्टेंटली इन द टॉप 3 स्टूडेंट्स थ्रू आउट द 2 years। बट जब मैं सीईटी का एग्जाम देने के लिए गई, आई वाज वेरी नर्वस, आई वाज स्केयर्ड एंड आई वाज फिल्ड विद एंटिसिपेशन। एंड ड्यू टू दैट मैंने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं किए आउट ऑफ 200, जबकि उस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था, मैंने 100 के 100 करने चाहिए थे। पर टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से 20 क्वेश्चंस मेरे ब्लैंक छूट गए, जिसकी वजह से जो मैंने एक्सपेक्टेड स्कोर सोचा था मेरा सीईटी में आएगा उतना आया नहीं। लेकिन फिर भी आई गॉट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सो आई वाज हैप्पी। बट व्हाट व्हेन आई गेव नीट, सीईटी के बाद मैं जब नीट देने के लिए गई तो तब मैं विदाउट एनी फियर, आई वॉज नॉट स्केर्ड कि मुझे मुझे 80% पेपर अटेम्प्ट करना है तो ही मुझे मेडिकल कॉलेज मिलेगा, या मुझे इतना इतना इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए, इतना कट ऑफ होता है, ये सब मैं सोच के नहीं गई थी। आई जस्ट वेंट देयर थिंकिंग कि मुझे अपना बेस्ट देना है। एंड सो आई गॉट और महाराष्ट्र रैंक 7 in my category in NEET. But unfortunately that year the admissions were taken from by CET exam. बट द होल मॉरल ऑफ द होल थिंग इज, आपको बहुत से लोग 11th 12th में ऐसा गाइडेंस देंगे कि बेटा इतना परसेंट पेपर अटेम्प्ट करोगे तो ही आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा। आप ये सब चीजों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। आपको बस ये सोचना है कि मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर आने वाला है और मुझे ज्यादा से ज्यादा जितना आ रहा है उतना सॉल्व करके आना है। नाउ आई वुड लाइक टू टेक यू विथ मी टू माई एमबीबीएस जर्नी। तो मेरा एडमिशन श्री भाऊ साहेब हीरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धुले में हुआ। अभी जब आप एमबीबीएस में एडमिशन लेते हो तो योर लाइफ, या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेते हो तो आपका लाइफ बहुत ज्यादा बदल जाता है। आप पहले बार प्रॉपर हॉस्टल लाइफ क्या होता है एक्सपीरियंस करते हो, और हॉस्टल लाइफ में आपको जो सीखने मिलता है वो आपको घर पे रह के कभी नहीं मिल सकता है। यू लर्न सो मेनी थिंग्स इन हॉस्टल। आप एक नए सिटी में जाते हो, यू गो विथ योर फ्रेंड्स, यू एक्सप्लोर द सिटी, आपको वहाँ पे अलग अलग चीजें पता चलती है। आपके कॉलेज में पूरे इंडिया से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटीज से लोग आते हैं। यू गेट टू इंटरेक्ट विद देम। आपका जो
दुनिया देखने का नजरिया होता है वो ब्रॉडन हो जाता है व्हेन यू गो टू अ प्रोफेशनल कॉलेज. So that is what happened with me. I made very good friends who are still my best friends right now. उनके साथ मैंने बहुत एक्सप्लोर किया. यू गेट टू लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स. बहुत सारे नए नए हॉबीज आप में बिल्डअप होना चालू हो जाते हैं जो आपको पता भी नहीं होता है कि आपको आता है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी इट वॉज पोएट्री. आई नेवर न्यू आई कुड राइट पोएम्स, बट नाउ आई नो पोएट्री इज अ इंटरेस्ट ऑफ माइन. मैंने एक इंस्टाग्राम पेज भी खोला है उसके लिए अभी, एंड आई एक्टिवली ट्राई एंड राइट पोएट्री. तो ऐसे आपको नए नए हॉबीज पता चलते हैं. बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं कॉलेज में जिसमें बहुत एंजॉय करते हो आप. बट एक एक आपका, आई वुड लाइक टू बर्स्ट योर बबल. इन 11th 12th ऑल योर पेरेंट्स एंड एवरीबडी इज लाइक, बेटा 2 साल पढ़ाई कर लो फिर तो जिंदगी में मजे ही मजे हैं. तो ऐसा हमेशा मेडिकल कॉलेज में ऐसा नहीं होता है. मजे होते हैं बट यू हैव टू स्टडी फॉर 4.5 years मोर. तो जो मेडिकल कॉलेज का जर्नी है, एमबीबीएस का जर्नी है, वो 4.5 years का कोर्स होता है जिसमें 4.5 साल आप पढ़ाई करोगे. उसके बाद देर इज 1 year ऑफ इंटर्नशिप कंपल्सरी. यू हैव टू डू एट योर experience, आपके practical skills है, you get them during this internship. Now few things about my experience in MBBS. So first year में जो मुझे जिस चीज का बहुत हेल्प, माई स्टडी टेक्निक 11th 12th. हमको 11th 12th में बताया गया था कि बेटा सीईटी, you have CET, so all your questions are going to come from state board. So most of my friends, what they did is they focused on their state board textbooks. They did not read anything else. I, on the other hand, I read that state board textbook, I read NCERT, and I read many other reference books on suggestion of Oak sir. So इसकी वजह से क्या हुआ, मेरा concept बहुत clear थे सारे. And this helped me in my first year. जब first year का, in my first year examinations, it helped me because मुझको 11th 12th का पूरा याद आ रहा था कभी भी लिखने के. Again, now moving on to the second year of MBBS. Second year को हम ऐसे chill period of MBBS भी बुलाते हैं because in second year you will organize various cultural festivals, various medical festivals. There is Ganpati festival, there are sport events. और इन सब में part लेना is as important as doing good in your studies because they help in your overall development. And for me, second year personally has been very productive क्योंकि मैंने सेकेंड ईयर में एक रिसर्च कंडक्ट किया था जिस जो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसके उस पर एक रिसर्च कंडक्ट किया था विच हैज नाउ बीन अप्रूव्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. और वो बहुत ही जल्दी एक काफी फेमस जर्नल में पब्लिश होने वाला है. सो फॉर मी, आई यूज्ड माय सेकेंड ईयर टाइम वेरी वाइजली. नाउ टेकिंग यू टू द मोस्ट टफेस्ट पार्ट ऑफ एमबीबीएस, दैट इज द फाइनल ईयर, जहाँ पे आपके पास समय होता है बहुत कम और पढ़ने के लिए मटेरियल एंड सब्जेक्ट्स आर वेरी ह्यूज. तो इस वक्त बच्चों को टेंशन आ जाता है कि हाउ डू यू कोप विद सो मच ऑफ मटेरियल टू स्टडी इन सच अ लिटिल टाइम. सो आई वुड लाइक टू गिव यू 3 सिंपल सजेशंस. आप में से अगर कोई बहुत जेन्युइनली डॉक्टर बनना चाहता है तो दे कैन कीप दिस इन माइंड वंस दे एंटर देयर मेडिकल कॉलेज. फर्स्ट थिंग इज, जैसे आप अभी अपने स्कूल में जिस तरह बुक्स पढ़ते हैं हम लाइन टू लाइन पूरा, वैसा मेडिकल कॉलेज में नहीं होता है. Medical college में you talk with your seniors and you look at your previous year question papers and you come up with a list of important topics, and those are the topics which you are going to give your maximum attention to. Second thing is, आपकी पढ़ाई चाहे हो या ना हो, you will have to attempt the whole question paper, otherwise आप पास नहीं होंगे. तो this is one golden rule of MBBS कि आपको सारे questions attempt तो करके ही आने हैं. And third most important thing is you are given exposure to the hospital environment in second year of MBBS itself, जहाँ पे आपको clinical postings होते हैं. So what is clinical postings? Clinical postings is आपको वार्ड में जाके उधर के पेशेंट से बात करना होता है. And you are taught the skill of history taking. Now history taking is what? It is like आपको अगर पेशेंट को पूछना है कि आपको क्या क्या तकलीफ हो रही है तो वो पूछने का एक साइंटिफिक तरीका होता है जिसको मेडिकल हिस्ट्री टेकिंग बोलते हैं, सो दैट आप कुछ मिस आउट नहीं कर रहे पूछते. एंड इफ यू वांट टू बी अ गुड डॉक्टर यू शुड नो हाउ टू टेक गुड हिस्ट्री. अगर आप अच्छी हिस्ट्री नहीं लेंगे तो आप करेक्ट डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे. अगर आपने करेक्ट डायग्नोसिस नहीं किया कि इसको कौन सी बीमारी है तो आप करेक्ट ट्रीटमेंट नहीं दे पाओगे.
So that is why your clinical postings are very important. You have to be very, very attentive in your clinical postings. Now, this was my experience of MBBS. Now, I will like to take you to internship, which is personally my favorite period in all of this journey. क्योंकि जो 4.5 साल तक आपने इतनी मेहनत करके पढ़ाई की है, यू फाइनली गेट टू अप्लाई दैट. आपको पता चलता है कि मैंने इतना पढ़ाई करके क्या फायदा हुआ. तो दैट यू गेट टू अप्लाई इन योर इंटर्नशिप पीरियड, which now I am doing my internship in my college itself. I have completed 9 months of my internship, and there are 3 more months for me to go. So जो एमबीबीएस में 4.5 साल आप पढ़ते हो, कभी कभी इट कैन गेट अ बिट फ्रस्ट्रेटिंग कि मैं सिर्फ पढ़े जा रही हूँ, कुछ हो नहीं रहा है. सिंस 4.5 years आई एम जस्ट स्टडीइंग. सो आपको पता है कि मैं रात को जाके मैंने पढ़ा है, या वॉट एवर हार्ड वर्क आई हैव डन, I am using that knowledge to save somebody's life or to make somebody's life better. And the satisfaction that comes along with it, that your knowledge can help save somebody's life or can help improve the quality of somebody else's life, that satisfaction is very immense. The feeling is indescribable. The happiness that you derive from it is huge. I would like to share a small heartfelt incident of internship with you guys. So when I was doing my gynecology posting, so in my gynecology posting, I delivered a baby all by myself. मतलब मैंने एक बच्चे का डिलीवरी किया अकेले, without any help from any seniors or anybody else. और वो दिन मुझे आज भी याद है. I was so my hands, क्या मैं अच्छे से सब कुछ कर पाऊंगी? I know what to do, but will I be able to do it properly? पर जब वो बच्चा जब डिलीवरी होती है, एंड व्हेन द बेबी टेक्स इट्स फर्स्ट ब्रेथ इन योर आर्म्स, एवरीथिंग एल्स सीजेस टू मैटर. आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, आपको जो इनसिक्योरिटीज है, एवरीथिंग जस्ट डिसअपियर्स. एंड यू हैव दिस न्यूली फाउंड रिस्पेक्ट फॉर योर प्रोफेशन, फॉर व्हाट यू आर डूइंग, फॉर लाइफ itself. So it was one of the most beautiful feelings I have ever felt in my life, and probably will ever feel in my life. Now, this is all the very glorious parts of MBBS, of being a doctor, that you get, आपको सोसाइटी में एक इज्जत मिलती है जो शायद बाकी प्रोफेशंस को इतनी नहीं मिलती. पर आप अगर बोलेंगे मैं डॉक्टर हूँ, तो सब इंस्टेंटली दे लुक अप टू यू, दे गिव यू रिस्पेक्ट. आपके पेरेंट्स, आपकी पूरी फैमिली, दे आर ऑल सो प्राउड ऑफ यू दैट यू हैव अचीव्ड इट, यू हैव बिकम अ डॉक्टर. लेकिन इसके पीछे थोड़े से सैक्रिफाइसेस भी करने होते हैं, जैसे हर चीज में होते हैं. इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, you will have to sacrifice. So here the first main sacrifice is, आपको इंटर्नशिप में कभी कभी 12 घंटे, कभी कभी 24 घंटे की ड्यूटीज करनी होती है. And in those 24 hours, sometimes you don't get to sleep even for 1 hour. Without sleep, you are just serving your patients and doing your duty. कभी कभी खाना खाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो आप कैंटीन में जाके बस मैगी खा के वापस ड्यूटी पे चले जाते हो. तो दिस स्मॉल सैक्रिफाइसेस यू हैव टू मेक. जैसे भी आपको दिवाली, दशहरा, होली, ईद पे छुट्टी नहीं मिलेगी, योर वर्कलोड विल इंक्रीज ऑन हॉलीडेज. And one major thing, if you are thinking of pursuing doctor as your profession, is it is a very long journey. आप अगर आपके बाकी फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करोगे, तो दे विल गेट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड स्टेबल मच बिफोर यू. वो लोग सेटल हो जाएंगे, बट फॉर यू टू फाइनली गेट सेटल्ड एंड ओपन योर ओन हॉस्पिटल, इट विल टेक मिनिमम ऑफ 10 years. तो इतना बड़ा टाइम आपको मोस्टली लगता है आपका पूरा सेटल होने में. So you have to consider that before going for this thing. But having said that, in spite of these sacrifices, being doctor is one of the most rewarding profession in this world. जब आप काम पर जाते हो और आप किसी की जिंदगी बचाते हो, किसी की जिंदगी बेहतर बनाते हो, किसी के दुख दर्द सुन के उनको ट्रीट करते हो, एंड व्हेन यू सी योर पेशेंट गेटिंग बेटर, जब आप देखते हो कि आपकी दवाई से या आपकी कभी कभी बात करने से ही पेशेंट को अच्छा लगने लग जाता है, द सेटिस्फैक्शन दैट यू गेट, जो फुलफिलमेंट, जो आपकी लाइफ आपको फुलफिल्ड लगती है, वो बाकी कहीं नहीं लग सकती. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोफेशन. So if you are considering being a doctor, please be, because India needs good ethically practicing doctors, which I am sure all of you will become one day if you are thinking of becoming a doctor.
Now, this is how I transformed my dream into reality. जब से मुझे पता था what is a dream, I always dreamt of becoming a doctor. There was no other dream. It was always I want to be a doctor. This medicine is my passion. I know this is my passion because लोगों को मूवी थिएटर में जाके खुशी मिलती है, किसी को पार्क में जाके रिफ्रेश लगता है. For me, if I go to hospital, I will feel energized. I will feel motivated. So it is my passion. Why am I telling you this? Because I want all of you to look for and find your passion. ऐसी कौन सी चीजें जो आपको अच्छी लगती है, ऐसी कौन सी चीजें जो करने में आपको इतना मजा आता है कि दैट यू कैन डू लाइफ लॉन्ग. देर आर सो मेनी ऑप्शंस. हमारे कंट्री में क्या होता है, इंडिया में मोस्टली हमको दो ही चीजें पता होती है. टिल वी एंटर क्लास 11 12 हमको दो ही चीजें पता होती है, एक तो डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर बनना है. हमको कुछ और पता ही नहीं होता है. हमको लगता है करियर मतलब दो ही है, डॉक्टर या इंजीनियर. So this is not true. There are so many career opportunities nowadays, each with its own set of merits and demerits. So before choosing कि आपको जिंदगी में क्या करना है, आपका कौन सा करियर चूज करना है, please just find out all the options that you have, what talents you have, वो किस ऑप्शन के साथ compatible है, where you can use your talents to the maximum and at the same time love what you do. You choose that as your profession. Never decide your profession on the basis of money. Money has to be secondary. If you love your job, you will get satisfaction at the end of the day. The money will not matter. Money तो हर profession में आपको जितना लगता है उतना आ ही जाएगा. But your satisfaction depends on how much you love your job. So before choosing what you want to be, explore all your choices. Look for what all options you have. And lastly, I would like to conclude and tell you all of my dear friends that these are the most beautiful years of your life. Utilize them well, study hard, work hard, be curious, keep learning from everyone and everything, and whatever is happening around you, keep learning from that and have a lot of fun and be inspired and keep inspiring others. Thank you very much. Thank you, Mansi. Thanks a lot. Thank you, ma'am. And first of all, hearty congratulations to you on your research paper being published in one of the world famous journal. That's a big, Thank you big so much. achievement. Thank you so Beyond much. that, it's always glad listening to an alumni, listening to the ex-students, and then listening to a student who's currently a doctor. That's a proud moment. It's not only a proud moment to the students who are listening to you, but to the whole staff members, the management, and on the behalf of the STRZVN family, I would really like to congratulate you. All your hard works Thank have paid here, but then it's the sacrifices of your parents, Yeah. which is never seen or which is never spoken of, but that Yeah. yes, your mom's decision or your parents' decision to send you to a hostel at an age of, a tender age of 12 and 13 years, then your hard work at various places, including your 11th and 12th, preparing for the NEET, and then going into the medical college, sacrificing a lot of things there. So it's always that, failure comes with success. You fail down and then only you finally succeed. Looking into failure is how you take your life into a angle of success. Either you quit after your failure or you give a damn try to it. So I'm sure you have given a hard, tough try to all your failing steps and then succeeded in life. So with this, I would just remember one quote said by Thomas Edison. I have not failed. I have not failed. I have just found 10,000 different ways, 10,000 different unique ways of being successful or of doing the work in a different way. So this is what is called exploring yourself, finding ways, finding different paths, and then following your passion, following your dream.
All the best, Mansi. Thank you so much. On behalf of the whole Srimati Tulsibai Ranglalji Jhambad Vidya Niketan family, I would like to congratulate you, your parents, and your hard work to ensure that you have done the best in your life. Thank you, Mansi. Thank you, ma'am. Thank you. Now, uh, our director, Meena ma'am, she is present in the meeting, but due to not keeping so good health, she's not here. So, on behalf of her also, I would like to bless you with lots of uh, good things you do in your life, lot of good opportunities you come across. Yeah. Thank you so much. And I hope she is doing well now. Yeah, she's I would keeping like good to health. talk. Just was a little busy with all other things at the other Yeah, end. yeah. Now it's the time for having a question answer session with our students. Yeah, So I sure. would like our students to raise their hands and just ensure that as and when they get the turn, they'll put forward a question to you, which Dr. Mansi would be answering for all of us. So we have here Vedika Sapkal. Yeah. Vedika, please unmute yourself. I would like to ask that, as you said, MBBS is Hmm. a long journey. Ain't make you impatient while seeing your peers that they were settled and they have their financially independence? So, how you overcome the feeling? That Vedika, that is a beautiful question. And yes, it did make me very impatient, to be honest, because your friends are earning so much more than you and they are buying other stuff, and you also want to buy that stuff. But here you are doing 12-hour, 24-hour duties for very less stipend. So it does make one impatient. But you have to remember that it was your decision, it was your dream, and the satisfaction which you are getting in your field by helping the patients, that once you start going to the hospital, all these other things don't matter. The settling down part, yes, it is one sacrifice you have to make in the field of MBBS, but that is fine because there are so many plus points. So it actually does not matter in the bigger picture, but it does make one impatient for a while. But then once you see, go to hospital, just go to hospital for half an hour and talk to your patients, and you feel so energized. And you realize, why did you start doing this in the first place? And everything just feels worth it. I hope I have answered. Absolutely, Mansi. Uh, Next question. We have Arna Davange here. Yeah. So, Arna, can you please unmute yourself? Which field are you looking forward to pursue in medicine? You're talking about the post graduation, right? After MBBS. Yeah. So right now, I think my passion is medicine. I'm thinking of doing MD medicine and then maybe DM cardiology is one way I could go, or I could think about doing MD radiology. So I am right now very torn between these very contrast two options, because if I want to go for cardiology, I have to put in at least, yeah, 7 years of effort, more years of effort. For radiology, it is just 3 more years, and then I get settled. But then, my heart says to go for cardiology, do MD medicine and go for cardiology right now. So mostly that. So, Mansi always wants to choose the tougher one. Yeah. Good. Next student for a question. Anyone interested to ask Dr. Mansi anything further? Okay, here we have Mohit Borse. So, Mohit, please unmute yourself. Yes, I have one doubt that my Hmm. all subjects are not perfect. Means bio and physics are clear, but I have not chemistry cleared. So how I Hmm. will um, do that? Okay, Mohit, what class are you studying in right now? Mohit, unmute yourself. I'm studying in eighth class. Okay. So you are facing problem with chemistry, right? Your physics and bio is good. Yes. So for chemistry, what you have to do is you have to practice. There are some parts of chemistry which you have to just learn. There are some parts like the inorganic part of chemistry. Now I don't remember exactly 8th standard में क्या होता था chemistry का exactly.
but your reactions and sometimes जो periodic table है वो सब तो तुमको learn ही करना पड़ेगा वैसे. So that so you have to learn some part you have to learn, but chemistry is very interesting when you look at the trends in periodic table, for example. Try to understand, go to your teacher and keep asking कि ये element इसके साथ react क्यों नहीं कर रहा है. Try to create your reactions and keep practicing your reactions. I think organic chemistry 8th standard में था यानी I don't remember, but in future you are going to study organic chemistry, which according to me is the most beautiful part of chemistry. There is so much mechanisms and so much you can explore in it. So once you start developing interest, it will get easier. Okay, thank you. Welcome. Yeah. Others? Mohit, please lower your hand now. Any other participant who's interested to interact with Dr. Mansi? Mansi, actually, we had taken a few questions beforehand also, because many a times due to Okay. network issues, students would not be able to interact with you. Yeah. So I have here a question which says that please share your memorable event during the internship, which you have already shared. But Yeah. beyond that, we would like to hear some difficult or challenging areas of yours. Okay. So yeah, during internship, one of the most challenging part is sometimes you are doing your duty. For example, in surgery, there are different various postings in internship. So major postings are gynecology, surgery, medicine. Sometimes it is like you are doing 12 hours, 24 hours duty and you do not learn anything during that day. So that for me is the most challenging day because you went to the hospital, you put in all your efforts, you did all the sampling, blood samples, you went to the blood bank, you issued blood, you prepared your patient for the surgery. But then you don't get to wash in the surgery. Sometimes you just have to do the hard work. You just have to do the we call it mama work. Sometimes it is like you are not learning, but you just have to do work. Those are the most challenging days of internship for me. But one memorable experience for me as a doctor, which I am very proud of, is during my medicine posting. There came a man to casualty. He had complaints of chest pain, and I think not a lot of people can diagnose myocardial infarction. That is a type of heart attack on ECG, which on my second or third day of posting I diagnosed and immediately shifted him to ICU. And so I think because of that quick diagnosis, his life was saved. Otherwise, I think he would not have been saved. So that was a proudest moment for me as a doctor, and as a very young doctor, that was a huge moment for me. That's a great experience and a great exposure to Yeah. you too. Yeah. Riddhi Rathi, you had raised your hand. Would like to ask something? You can unmute yourself, Riddhi. Yes, ma'am. Actually, I want to ask how to cope up with the stress. With which stress exactly? Riddhi, unmute About yourself. studies or a lot of load. Yeah. So for 11th, 12th study stress, there are many ways. Firstly, I told you having a routine. In your routine, put in some time for whatever hobby you. किसी को अगर गिटार बजाना अच्छा लगता है तो every day at least for 1 hour or 2 hours you can go for that. So for 11th 12th that is all you can do to scope up with stress because आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है. आप रोज 2 घंटे या उससे ज्यादा आप टाइम नहीं दे सकते हो आपके हॉबीज के लिए. Once you enter MBBS, the stress is only before मतलब 1-2 महीने एग्जाम के 1-2 महीने पहले ही स्ट्रेस आता है आपको. साल भर कोई स्ट्रेस नहीं होता है. You are just going to hospital, doing lecture, like attending lectures, and then you come, you chill with your friends and all. Only in the last like before 3 months or 2 months before the exam, you will get stressed. So during that time, you have to stay calm. You can go for meditation. Meditation for me has been really useful. So like the older students, 11, 12 students, after 11, 12, you can go for Vipassana. I just did a 10-year course of 10-day course of Vipassana, and I think that is one thing. Actually, everybody, all the teachers and all the non-teaching staff, everybody who's listening to me, I would like to recommend this to everybody. This has been one of the most enriching experience of my life. So all the life stress, you can cope with that.
So meditation, your hobbies, having a good friend circle. Because MBBS में mostly हम साथ में पढ़ाई करते हैं तो अच्छी पढ़ाई होती है. अकेले इतना बड़ा बुक लेके बैठोगे तो नींद आ जाती है. But if you have one or two good study partners, then also you can cope up with your studies का stress very nicely. Very valid points. Anyone else would like to interact here? Okay, so no one raising up their hands. Yeah. So with this, I have a few more questions here, Mansi. Yeah, Like sure. once of the student want to know that what should be done from class 8 for the medical preparation. Okay. So I would say from class 8 to 10th, do not do anything for medical preparation. Because 2 years, 11th and 12th are according to me more than sufficient. Don't take that stress from such a young age कि मुझे 8 से ही अभी मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए मैंने क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना चाहिए. Sure, go for foundation classes, but do it without the stress of it. Because for 2 years you are going to be stressed about the medical preparation 11th and 12th. So at 9th, 10th, do your foundation classes. You can go, so they, and in the classes they will guide you about all the preparation that you have to do, all the academic part of the preparation. But I would like to say, do not get stressed from such a young age. Do it as a part of learning, that you're going to get to learn something new. Do it with that zeal and enthusiasm, but do not take the pressure from a very young age. That is what I would say. Okay, Mansi. I hope all the doubts and the clarifications, whatever the students needed, was given by you sufficiently, and they must be really motivated. This would have been this is really a good session interacting with you. Now we come to the end of the session, and I request our anchor, today's anchor, this is Damini Dhake ma'am, to present her vote of thanks. And once again, Mansi, all the best for your future endeavors. Thank you, ma'am. Thank you so much. Over to Damini ma'am. The wonderful and elegant thing in this world cannot be even seen and touched. One among them is thank you, which must be felt with heart. I would like to thank our beloved school director Neenaji ma'am, our principal Miss Alumni ma'am, staff members, students, and last but not least our parents for making this alumni talk as a grand success. Mansi, you have indeed put best of your efforts to make this event unforgettable. Accept my warmest thankful wishes for attending and making Alumni Talk special and memorable. Your thoughtfulness is a gift for our students. It will forever treasure. Thank you. Have a wonderful day ahead. Thank you all. Thank you, Damini ma'am. With this, we come to the end of the session, end of the seminar. The speaker was Dr. Mansi Naphade. Thank you, Dr. Mansi. Once again, wish you all the best. Hope you shine like a star in the field of medical sciences and bring lot of laurels to your parents and of course to the small town of Nandura. Thank you once again. Thank you so much.